भारतीय जनता पार्टी की बरसर इक़्तिदार हुकूमत की जानिब से स्कूली किताबों से प्रोग्रेसिव ऑथर्स के असबाक को निकालकर हिंदुत्व के लीडरान से जुड़े असबाक शामिल किए जा रहे हैं। बीजेपी हुकूमत की जानिब से पहले सिर्फ टीपू सुल्तान से जुड़े असबाक को स्कूली निसाब से निकाला गया था, लेकिन अब रियासत की जय्यद व नामूर प्रोग्रेसिव शख्सियात के असबाक को भी निकाला गया है। बीजेपी हुकूमत के इस फैसले से बरहम होकर मुतअद्दिद तलबा की तंजीमों की जानिब से दारुल हुकूमत बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक पुरजोर एहतजाज का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रिटायर्ड प्रोफेसर व प्रोग्रेसिव ऑथर जी रामकृष्णा ने कहा कि बीजेपी हुकूमत का स्कूली निसाब में हिंदुत्व एजेंडा को नाफिज करना प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के लिए खतरा है। प्रोफेसर रामकृष्णा ने कहा कि हुकूमत स्कूली किताबों में तब्दीली लाने के लिए मुतअल्लिका कवानीन की धज्जियां उड़ाकर अपनी मनमानी कर रही है, जो कि हरगिज काबिल कबूल नहीं। What is essentially to be noted is that in the context of education in our state, all norms of democratic thinking and functioning have been abandoned, not only from the point of view of the methodology but also from the point of view of the contents. The new generation of students in our state should not be fed with ideas which do not endorse the pluralist culture of our country. Something very sectarian is put forth as a matter of great value. And from the point of view of the method that they have adopted. See, earlier in the textbook, one of my short pieces had been included. Maybe to exclude it, it is their prerogative and therefore they don't have to seek permission. But if they want to include anything by me or anybody else in the new anthology, they must first obtain the consent of the authors. They have not obtained consent from anyone. It is an arbitrary selection and an authoritarian approach to the preparation of the anthology. The ethos that one needs to accept and follow in the preparation of a textbook has been totally given up. इस मौके पर एहतजाज करते तलबा ने कहा कि रियासत के स्कूली निसाब में प्रोग्रेसिव अशखास के असबाक को निकालकर हिंदुत्ववादियों के असबाक को शामिल करना न सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने की राह पर चलना है, बल्कि नई नस्लों को रेडिकलाइज करना है, जो कि एक पुरअमन सोसाइटी के लिए खतरा है। तलबा ने कहा कि इनका ये एहतजाज असल में बीजेपी की जानिब से लाई गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ है, जो कि ब्राह्मणवाद को फरोग देने का काम कर रही है। जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। बाजारीकरण को और तेज़ कर रहे हैं लोग, मतलब और कॉरपोरेट जो पूंजीपति है उनके हाथ में जो है शिक्षा को दे दिया जा रहा है, ताकि शिक्षा जो है उससे क्या होगा कि और ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा और ज़्यादा पैसे लगेंगे लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो उससे जो पिछड़े तबके के स्टूडेंट्स हैं और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है उनके बच्चों को शिक्षा जो है नहीं मिलने वाला है, उनसे और शिक्षा दूर होने वाला है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया जो भगवाकरण हो रहा है, जो हिंदुत्व एजेंडा जो है उसको आरएसएस बीजेपी अपने टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, ताकि बचपन से लोग पढ़ते पढ़ते ये जो सोच है, ये जो चिंता है, इसको पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े। तो ये उनका मेन एजेंडा है। तो इन दोनों चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं। तो यही मेन हमारा मुद्दा ये है कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। They are radicalizing future generations towards a particular ideology that they preach, which is the Hindutva-wadi ideology, to
further the agenda of Hindu Rashtra. So when you look at it in the larger aspect, now there have been multiple incidents that have come to reports of how they are not just communalizing the textbooks and syllabus for students in Karnataka, but it is the Brahminization which we are condemning. So when this is what the future generations study, imagine the terrible kind of mindset that gets cultivated. And what does that mindset lead to? It leads to a non-inclusive society, it leads to a radicalized Hindutvavadi society and furthers that agenda. So we have seen how they had initially removed a chapter around Bhagat Singh, but due to people's resistance, it was brought back and they tried to cover it up, obviously. Besides that, we are seeing them introducing chapters related to Hegdewar. So it's important to understand from societal perspective as to who this Hegdewar is. So when you look at it, you will realize that he comes from, his associations belong to the groups that led mercy with the British during the independence struggle. And we are talking about including chapters on those people who fought for our independence. So if this is the mindset that's being cultivated, it needs to be strongly condemned and protested against. ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।